Now number 10. Read the following extract carefully and answer the question that follows. No time to see when would we pass. What is this life is full of care. We have no time to stand and stare, no time to stand beneath the brow and stare as long as sheep or cows. ये स्टैंजा कौन सा पोएम से लिया है? लीजर से लिया है. Now you have to answer the question that follows. What does the poet mean by what is this life is full of care? What is this life is full of care का मतलब क्या बताना चाहता है poet? The poet means what is the life is full of care means the poet refers to a person whose life is busy mostly with necessity meant only for the body. वो क्या बोलना चाहता है कि ऐसा पर्सन को रेफर कर रहा है जिसका लाइफ बहुत ही बिजी है और मोस्टली विथ नेसेसिटी मीन्स ओनली फॉर अपने ही शरीर के लिए एकदम ही ज़्यादा बिजी है, उसे वो व्हाट इज़ दिस लाइफ अ फुल ऑफ केयर से डिस्क्राइब किया है. नंबर बी, व्हाई डज he not stand beneath the brow? The poet is talking about one extremely busy and stressful life. We don't have the time to stand and stare beneath the brow like cows and sheep. उसने क्यों ये डिस्क्राइब किया है? क्योंकि हमारे कोई भी आदमी के पास अभी के लिए अपने लिए टाइम नहीं है, सिर्फ अपने लिए ही टाइम है, बाकियों के लिए नहीं है. इसलिए वो आदमी को ऐसे कंपेयर किया गया है लाइक काउज एंड sheeps. नंबर सी, What is that sheep and cow do for which we have no time? क्या करते हैं काउज और शीप जो हमारे पास टाइम नहीं है करने के लिए? We don't have time to stand and stare beneath the brows like cows and sheep. हमारे पास क्या नहीं है? टाइम नहीं है. जैसे कि काउज और शीप सिर्फ खड़े होकर देखते हैं, इधर उधर जाते हैं, वैसा वाला टाइम हमारे पास नहीं है. यही बात पोएट इस पोएम में दिखाने जा रहे हैं या फिर दिखा रहे हैं. आप लोग ये वाला पोएम का क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं और फिर यू कैन डू द क्वेश्चन दैट follows. Two roads diverged in a yellow wood and sorry I couldn't travel both. And be one traveler long I stood and looked down one as far as I could to where it beneath in the undergrowth. This stanza has been taken from the road not taken. Number A. Why does the narrator say I could not travel both? Narrator ने मैं दोनों में travel नहीं कर सकता. क्यों बोला? Because answer, the poet means that he feels sorry because he cannot travel both the roads. Number B. What did the poet see at a distance? Poet ने distance में क्या देखा? The poet see two roads diverge in a yellow wood. Perhaps it was autumn and both the roads were covered with the dead or fallen yellow leaves. The first one went down. It is an undergrowth of the forest. Number C. Which road did the poet select it? कौन सा road select किया poet ने? Answer, the poet took the second road. The poet chose the second road over the first, thinking that he would come to it some other day. Yet he was very doubtful that he would ever be able to come back to it someday. Now 11. Write a letter to the collectors of your district to provide two separate dustbins for biodegradable and non-biodegradable waste separately in the district. Give your suggestion. आप लोगों को यहाँ पे लेटर लिखना है कलेक्टर को ये बताते हुए कि आप लोगों के जगह पे डिस्ट्रिक्ट में दो सेपरेट डस्टबिन लगाया जाए जहाँ पे आप लोग बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट अलग अलग डाल सके. आप लोगों को सबसे पहले एड्रेस डालना है, जैसे मैंने डाला है सुश्रत नगर HFC रोड कोलकाता और पिन कोड भी डालना है. आप किसे लिख रहे हैं? दिस इज़ ऑफिशियल लेटर ना, तो आप लोगों को एकदम प्रॉपर तरीके से लिखना है. टू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफ कोलकाता DM रोड कोलकाता. सब्जेक्ट क्यों है? रिक्वेस्टिंग फॉर प्रोवाइडिंग सेपरेट डस्टबिन फॉर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. आप लोगों को ये अच्छे से लिखना है कि आपका सब्जेक्ट क्या है, आप लोगों को आप लोग क्यों ये लेटर लिख रहे हैं. Dear respected sir, madam, as holding the scent of a responsible citizen, I want to draw your attention to the need of separate dustbin for biodegradable waste and non-biodegradable waste. It is essential that biodegradable and non-biodegradable waste should be distracted in two separate bins as it helps in effective treatment and disposal of this waste. Request you to provide the needed
योर एफर्ट विल बी अप्रिशिएटेड, थैंकिंग यू, योर फेथफुली। आप लोगों का नाम लिख सकते हैं अविनाश रॉय। यहाँ पे कैसे लिखा गया है, सीधा सीधा कि हमारे एरिया में एज आप कलेक्टर हो के, क्या है कलेक्टर का काम, क्या है सिटीजन का रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करना। तो आप लोग आज जैसे आप अपनी जगह पे मतलब अपना पोजीशन पे है, हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग हमारे डिस्ट्रिक्ट में बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल डस्टबिन सेपरेट करके रख दिया जाए, ताकि हम लोगों को वेस्ट सेग्रीगेट करने के लिए ईजी हो। अगर दोनों वेस्ट एक ही जगह पे होगा तो इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर अस टू डिस्पोज इट। सो अच्छी तरीके से डिस्पोज करने के लिए भी सेपरेटली होना चाहिए, इसलिए आप हमें डस्टबिन प्रोवाइड करें। ऐसे करके आप लोग एक लेटर लिख सकते हैं कलेक्टर को। नंबर 12, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड मेक अ समरी इन अबाउट 100 वर्ड्स। नीचे दिए हुए पैसेज को आप लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ के छोटा करके 100 वर्ड में एक समरी बनाना है। The Kali River or Kali Nandi is a river flowing through Uttarakhanda district of Karnataka state in West Bengal. The river rises near Digi, a small village in Uttarakhanda district. The river is the lifeline to some 4 lakh people in the Uttarakhanda district and support the livelihood of tens of thousands of people including fishermen on the coast of Karwar. There are many dams built across the river for the generation of electricity. One of the important dams built across Kali River is a super dam at Ganeshgudi. The river runs 184 km before joining the Arabian Sea. Significant and picturesque, the Sadashiva Fort is now a popular tourist destination located by the coastal highway Kali River Bridge, which has been built above the confluence of the river and the Arabian Sea. The national highway NH17 continue on the Kali Bridge built over Kali River, and the road continued to split and Sadashivgad Granite Rock Hill to connect Karnataka to Goa. In August 2019, due to excessive rain in the region, it caused flooding and loss of property and animal life due to the flood which took place when huge amount of water was discharged on the downstream areas. Many people lost their houses and moved to rehabilitation service provided by the government. ये बहुत लंबा है in a Kali river, ये इसको आप लोगों को छोटा करके लिखना है। ऐसे लिख सकते हैं आप लोग आंसर। द काली रिवर और काली नंदी इज अ रिवर फ्लोइंग थ्रू उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका स्टेट इन इंडिया। द रिवर अराइज नियर दिगी, अ स्मॉल विलेज इन उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट. द रिवर इज द लाइफ लाइन टू सम 4 lakh people in the Uttarakhand district and support the livelihood of 10,000 of people including fishermen and coast of Karwar. There are many dams built across this river for the generation of electricity. One of the most important dam built across Kali River is the super dam at Ganeshgud. In August 2019, due to excessive rain in the region, it caused flooding and loss of property and animal life due to the floods which took place when huge amount of water was discharged on the downstream area. Many people lost their houses and moved to rehabilitation service provided by the government. यहाँ पे भी आपने वही लिखा है जो पैसेज में है, पर ये थोड़ा छोटा करके लिखा गया है विद इन 100 वर्ड्स। समरी का मतलब क्या होता है, जो लंबा पैसेज है उसे छोटा करके लिखना है। नंबर 13, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। ये पैसेज अच्छी तरीके से पढ़ के क्वेश्चन का आंसर लिखना है। Once upon a time there was a king who had gone to visit neighboring kingdom. He was gifted a pair of baby macaw parrot by the king of the last kingdom where he was visiting. There was the most beautiful bird he had ever seen. So upon returning to his kingdom, he called for a bird trainer and asked him to train macaw parrot. The king also arranged a place in the palace garden for the parrot. He offered looked at the form of his palace window. As time passed, one day the trainer came to the palace and informed the king that through one of the parrot was flying majestically high in the sky, the other one was not moving from the branch since the day it has arrived. Once hearing this, the king summoned trainers and healers from a nearby kingdom. They all tried their best but couldn't make the parrot fly. He even asked his courtier to try to
find a way to make the parrot fly, but they all failed. The parrot was not moving from its branch at all. Finally, after trying, even the king thought that maybe he needs someone who may be more familiar with natural habitat. He asked his courtier to get a farmer from the countryside and take him to the parrot to see if he can understand the problem with the parrot. The next morning, the king was thrilled to see the parrot flying high above the palace garden. He asked a servant to call that farmer to meet him. The servant quickly went and looked at the farmer, who came and stood before the king. The king asked him, "How did you make the parrot fly?" With his hand folded with respect, the farmer said, "The king, it was very easy, your majesty. I simply cut the branch where the bird was sitting." Moral: we are all gifted with energy to find a success in our life, but fail to gather a courage which is required to reach height of success and end up clinging to the things that are familiar to us. We need to free ourselves from our comfort zone to explore new opportunities, find a success beyond our capacity. ये पैसेज क्या बताता है? Once upon a time there was a king. एक राजा था जो एक अपना नेबरिंग किंगडम विजिट करना गए थे. वहाँ पे उसे 2 पेयर ऑफ बेबी मकाओ एज अ गिफ्ट मिला, जो था वहाँ का लास्ट किंगडम. जहाँ पे वो विजिट किया वहाँ से उसे 2 पैरट्स मिला. तो 2 पैरट्स में से एक पैरट वो से क्या लगा कि इसे ट्रेन करना कोई चाहिए, तो इसलिए वो एक ट्रेनर को भी लेके गया पैरट के साथ. और फिर एक पैरट इतना अच्छी तरीके से फ्लाई कर रहा था, लाइक दैट पैरट वाज फ्लाइंग मैजेस्टिकली हाई इन द स्काई. बट द अनदर वन, दूसरा पैरट था, वो उड़ ही नहीं रहा था. तो किंग को बहुत ही टेंशन हुआ कि ये क्यों नहीं उड़ रहा है, एक तो अच्छी तरीके से उड़ रहा है, दूसरा क्यों नहीं उड़ रहा है. तो उसे लगा कि इसे कोई ना कोई लेके आना चाहिए जो ये पैरट को उड़ा सके. तो फिर उसने बोला, किंग ने बोला कि इसी का फेमिलियर जो बर्ड, एनिमल्स, जंगल्स रिलेटेड कोई भी होता है उसे लेके आओ और वो ये पैरट को उड़ाने में हेल्प करेगा. इसलिए एक फार्मर को लेके आया और फार्मर ने उस पैरट को भी उड़ने में हेल्प किया. देन किंग आस्क्ड कि तुमने क्या किया जो पैरट इतने दिनों से नहीं उड़ रहा था वो आज उड़ रहा है. तो फार्मर ने बोला, सिंपली मैंने वो जो पैरट जिस ब्रांच में ट्री का जिस भी ब्रांच में बैठा हुआ था उसे मैंने कट कर दिया, इसलिए वो फ्लाई हाई कर दिया. सो व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? वो पैरट अपने कंफर्ट जोन से निकल नहीं पा रहा था, पर जब फार्मर ने वो ब्रांच कट कर दिया तब तो वो अगर ब्रांच कट करके अगर वो बर्ड नीचे गिरती तो वो मर जाती. पर क्या करना है, वो ब्रांच कट होगा तो बर्ड को तो फ्लाई करना ही है ना. टू लिव हिज लाइफ और हर लाइफ द पैरट हैज़ टू फ्लाई, इसलिए वो फ्लाई कर गई. ऐसे करके फार्मर ने बोला. नाउ यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज. ए, Why did the king arrange for a bird trainer? उसने किंग ने बर्ड ट्रेनर क्यों अरेंज किया? The king arranged for a bird trainer and asked him to train macaw parrot. ट्रेन करने के लिए उसने ट्रेनर हायर किया. B, what did the bird trainer report about the birds flying? बर्ड का ट्रेनर ने क्या रिपोर्ट दिया किंग को? The bird trainer reported that one of the parrot was flying majestically high in the sky. The other bird was not moving from its branch since the day it has arrived. क्या उसने क्या रिपोर्ट दिया कि एक पैरट बहुत ही अच्छी तरीके से फ्लाई कर रहा है और दूसरा बिल्कुल भी फ्लाई नहीं कर रहा है. Why was the farmer called and what did he do? फार्मर को क्यों बुलाया गया और उसने क्या किया? One day, one bird was not moving from its branch, so king asked his courtier to get a farmer from the countryside and take him to the parrot to see if he can understand the problem with the parrot. Farmer cut the branch where the bird was sitting and bird fly. उसने क्या किया? किसे बुलाया? फार्मर को क्यों बुलाया उसने? फार्मर को इसलिए बुलाया क्योंकि वो हेल्प कर सके पैरट को ऊंचा उड़ने के लिए. तो फार्मर ने क्या किया? ब्रांच कट कर दिया जहाँ पे वो पैरट बैठी हुई थी और पैरट उड़ने लगी. डी, हाउ डज कम्फर्ट जोन स्टॉप द सक्सेस ऑफ मेनी कम्फर्ट लवर्स? हम लोग अपना कम्फर्ट जोन कैसे तोड़ सकते हैं? जो भी अपना कम्फर्ट जोन का मतलब कि आपका रहन सहन, आपको जो भी करना पसंद है वो चेंज नहीं कर पाते कभी कभार. जैसे आप लोगों को अकेले बैठना पसंद है, आप लोगों को
कुछ खाना खाना पसंद है, पर आप जब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं तो आपका वही रूटीन तो नहीं होता है। आप लोगों को दोस्तों के साथ भी रहना है, कभी दोस्तों के साथ बाहर जाना है, तो अगर वो मैच नहीं कर पाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड टू ब्रेक योर comfort zone. So answer is, we need to free ourselves from our comfort zone to explore new opportunities and find a success beyond our capacities. हम लोग अपना कंफर्ट जोन तोड़ के क्या कर सकते हैं, हम लोगों को न्यू अपॉर्चुनिटीज मिलेगा, न्यू सक्सेस मिलेगा, इसलिए हम लोगों को अपना कंफर्ट जोन तोड़ना ही होता है। 14. Read the passage given below and answer the question that follows. Dog do not understand the language we talk, only our tone and body language. When you are angry, don't yell, as this causes confusion and agitation. Be stern and firm without raising your voice. And when you want to applaud a light-hearted good boy girl word. Despite popular belief, a lot of dogs do not like being hugged by everyone. Hugging isn't animal trait, so they don't understand it well. Forced behavior is undesirable and it leads to either a fearful or aggressive response. Handling your pet with utmost care is the number one rule of your pet parenting. Discouraging people from touching your pet until they are comfortable with them. Believe it or not, this causes a lot of stress and even intimidates the pooch at times. Imagine you are walking on the road and strange people in a street right in your eyes. Strange clippedness isn't. Now think about pooch in the same situation all the time. Staring into a dog's eyes make them extremely uneasy. We all love taking our pets for a long walk, but this is where we need to pay the most attention. Always make sure your dog is not a tight leash by keeping the leash loose. You let your pooch know that everything is fine. Your dog can sense your stress and you try to pull him her close and then get more agitated. Keeping the leash loose and let them know everything is under control. A dog with a tight leash is more likely to bark or react aggressively even in the midst of a social situation. You need to work on a pleasant working pattern with your approach. Always remember, if you are stressed, they are stressed. यहाँ पे आप लोगों को डॉग के बारे में एक पैसेज दिया गया है जहाँ पे डॉग को हग करना एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट करता है जहाँ पे डॉग कंफर्टेबल नहीं होता है। तो आप लोगों को कोई भी आप लोग डॉग के साथ कोई भी बिहेवियर कर रहा है, मेक श्योर फर्स्ट कि डॉग कंफर्टेबल हो, तभी वो आप लोगों का हगिंग वो एक्सेप्ट कर पाता है। किसी भी डॉग को टीज करना या फिर किसी भी डॉग को अंडरस्टैंड किए बिना आप लोगों को कुछ भी अगर डॉग्स को करते हैं तो इट मे हार्म यू ओनली. ओके, so it has been said a lot about the dog, so you have to read the passage carefully and answer the question that follows. Number A, do dog understand our language? How do they understand? क्या डॉग हमारा लैंग्वेज समझ पाता है? कैसे समझ पाता है? Dog do not understand the language we talk, but they understand by making focus on us and observe our physical clue to determine what we want them to do or not do. डॉग हमारा लैंग्वेज समझता नहीं है. कभी कभार हम लोगों को फील होता है कि वो समझता है क्योंकि हम जो भी बोलते हैं वो करते हैं, बट द एक्चुअली दे डोंट अंडरस्टैंड आवर लैंग्वेज. नो, इन रियलिटी दे डोंट अंडरस्टैंड आवर लैंग्वेज. पर वो हम लोगों को कैसे अंडरस्टैंड करता है? वो हम लोगों का फिजिकली हमारा जेस्चर देख के वो हम लोगों को अंडरस्टैंड करता है. बी, व्हाट फोकस बिहेवियर इज मेंशन्ड एंड हाउ इट इज मिसलीडिंग? कैसे वो फोर्स बिहेवियर मेंशन किया गया है इस पैराग्राफ में? हगिंग इज एन एनिमल ट्रेट, सो दे डोंट अंडरस्टैंड इट वेल. हग करना एनिमल्स का ट्रेट नहीं है. जैसे हम लोग इंसानों से हग करते हैं, दैट इज़ एन पर्सनस ट्रेट, पर एनिमल्स का वो ट्रेट नहीं होता है. सो वो अंडरस्टैंड नहीं करता है और उसे लगता है कि वो फोर्स बिहेवियर है. इट्स अनडिजायरेबल एंड लीड देम टू ईदर अ फेयरफुल और अग्रेसिव रिस्पॉन्स. तो वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है कि वो आप लोग वो डॉग को लव कर रहे बाय हगिंग. तो अगर डॉग अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं तो वो डॉग विल शो हिज अग्रेसिवनेस टूवर्ड्स यू. नंबर सी, व्हाई शुड वन नॉट टच पेट्स? क्यों टच नहीं करना चाहिए पेट्स को? टच को पेट्स नहीं करना चाहिए तब तक जब तक कि पेट्स कंफर्टेबल नहीं हो आप लोगों के साथ. विच वर्ड इन पैरा 4 मीन्स हार्नेस? हार्नेस का मतलब क्या है इन पैराग्राफ 4? यहाँ पे देखिए तो आप लोगों को पैराग्राफ दिया गया है, तो ये पैराग्राफ आप लोगों का मेंशन भी किया गया है कि पैरा 4 में हार्नेस का मतलब क्या है. टू कंट्रोल समथिंग यूजुअली
In order to use it, power is the same meaning. एंजाइटी का मतलब क्या है? नॉट अ सेम मीनिंग, ये सेम मीनिंग नहीं है, बट हार्नेस का मतलब क्या है? टू कंट्रोल समथिंग यूजली in order to use it, power. Anxiety का क्या है? Anxiety is a feeling of fear, dirt and uneasiness. Number 15. Read the passage given below and complete the statement that follows. यहाँ पर भी आप लोगों को passage पढ़ना है और फिर नीचे दिए हुए क्वेश्चन का आंसर लिखना है. Arise awake and stop not until the goal is reached is an inspirational slogan popularized in the 19th century by Indian monk Swami Vivekananda. Swami Vivekananda is respected as a prominent leader, thinking and saint of a pre-independent era. His teaching influenced many, not just in India but all over the world. He was inspired, motivated and guided by ancestor scriptures of India. He spoke, preached and lectured at different places in India and in different parts of the world, especially in the West. Swami Vivekananda wanted all the Indians to join their hands together in the service of the nation. Through he followed the Hindu tradition for his spiritual growth. He had respect for all other religions, just like his mentor and spiritual Guru Ramakrishna Param Saha. It is Guru Ramakrishna Param Saha. All the religion tradition leads to the same goal. He found that all the religions in the world teach love and fraternity, so that people from different backgrounds can come together to serve the society and the nation. Every individual is capable of attaining the highest spiritual status, which is the sole purpose of life. He was of opinion that you cannot believe in God until you believe in yourself. Swami Vivekananda devoted his life working for the poor and helping them throughout his life. He rendered selfless service of human life, teaching the world about equality of all the religion. He advocated for access to education to all, particularly the youth of the country, who has the potential to take the nation to new level of growth and prosperity. He also believed that the dream of the development nation can only be achieved when the masses are lifted out of poverty. Swami Vivekananda will continue to live with us till eternity through his थॉट्स एंड आइडियाज़. ये पैसेज में स्वामी विवेकानंद के बारे में बोला गया है, कैसे स्वामी विवेकानंद ने अपने टीचिंग प्रीच किया इंडिया में, नॉट ओनली इन इंडिया बट आउटसाइड द इंडिया, एंड हाउ ही हैज़ डिवोटेड हिज लाइफ टुवर्ड्स द पुअर एंड द किड्स हु आर इन नीड. स्वामी विवेकानंद के बारे में सब कुछ लिखा गया है, उसका बिलीव, उसका थॉट, स्वामी विवेकानंद क्या सोचते थे, स्वामी विवेकानंद क्या परस्यू करना चाहते थे और स्वामी विवेकानंद यूथ को क्या बोलना चाहते थे, वो सब स्वामी विवेकानंद का ओपिनियन क्या था. लाइक यू कैन नॉट बिलीव इन गॉड अंटिल यू बिलीव इन योर सेल्फ. अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद, आप लोग गॉड को बिलीव नहीं कर सकते जब तक आप अपने आप को बिलीव नहीं कर पाते. ऐसा थॉट स्वामी विवेकानंद का था. सो यू हैव टू फॉलो ऑल दिस पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज. आप लोगों को यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, ये पैसेज में ही है आंसर, आप लोगों को पढ़ के ये फिल करना है. ए, स्वामी विवेकानंद इज अ answer, respected as a prominent leader and thinker and saint of the pre-independent era, and his teaching had influenced many, and not only in India but throughout the world. जो ब्लैक में लिखा गया है वो है आपका आंसर. B. Swami Vivekananda followed the Hindu tradition of his spiritual growth tradition but respected for all the other religion, just like his mentor and spiritual guru Ramakrishna Paramhansa. Number C. Swami Vivekananda mentor was Guru Ramakrishna Paramahansa and believed that all religions lead to the same goal. D. Swami Vivekananda believed that youth of the country had the potential to take the nation to new level of growth and prosperity, to take the nation to develop, so he advocated for access to education for all. Now